जय श्री कृष्णा, जय गंगे। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आपको याद होगा हमने पहले एपिसोड में व्रत को, उपवास को लेकर काफ़ी बातें की हैं। आज हम बात करेंगे मौन व्रत को लेकर। मतलब मुझे तो सोच के यही लग रहा है कि कोई मौन व्रत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप रहना एक वक्त के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग, जो हमारे तपस्वी हैं, हमारे जो साधक हैं, हमारे जो साधु सन्यासी आज भी हैं, वो मौन व्रत रखते हैं। कितना कठिन होता होगा ये। आखिर इसका मतलब क्या होता है? मौन व्रत का हमारे जीवन के फायदों के साथ क्या लेना देना है? एक्चुअली ये है क्या? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। जय गंगे साध्वी जी। जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में भी मैंने ये बात की थी। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको एक बार फिर से याद दिला दूं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने फ़ोन किया था साध्वी जी के पास में, तो फ़ोन किसी और ने उठाया। उन्होंने बोला कि साध्वी जी अभी मौन व्रत में हैं, इसीलिए आप मुझे मैसेज पास ऑन कर दीजिए। मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये मैसेज है, आप साध्वी जी को दे दीजिएगा। लेकिन आज आप मेरे सामने हैं लाइव, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो ये कि मौन व्रत क्या है? मौन व्रत बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक व्रत लिया कि हम बोलेंगे नहीं, बस इतनी सीधी सीधी है। लेकिन उसकी गहराई में जब उसका जो डीपर मीनिंग, डीपर पर्पस, डीपर वे और डीपर बेनिफिट इज सो मच। देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। क्या आपने कभी कुछ ऐसे बोला जो मुंह से निकल गए, जो बाद में आपको लगा अरे अगर मैंने नहीं बोले तो कितना अच्छा होता? हाँ, होता है। होता ना, सबको होता है। सबके साथ होता है। सबके साथ होती है। हाँ। तो क्या है, मौन व्रत जो है उसका बेनिफिट्स आर so many. But let us start on the practical level and then we will go deeper and deep. जो भी मन में आते हैं, जब भी आते हैं, हम बोल देते हैं। बाद में सोचते हैं, शायद उसी समय, मतलब मुंह से निकलने की तुरंत बाद, कभी कभी later that night सोते हुए मन में आता है कि अरे यार ये नहीं कहना चाहिए था। But we had no opportunity at the time. मन में आए और बोल दिया। मौन व्रत रखने से we actually train the mind to realize कि ऐसे नहीं है कि कुछ मन में आए और मुझे बोलना है। मेरी एक चॉइस है। विचार तो मन में है, ऐसे नहीं कि सारे विचार जो है मुझे बोलना है। जब हम मौन व्रत रखते हैं तो काफ़ी सारे, खासकर शुरू में, विचार तो आते हैं जो लगता है कि कहने के लायक है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, मौन में है। तो what happens is our brain develops a skill, a habit, a strength कि सोचने के बाद बोलने से पहले एक स्पेस होता है, a space between the thought and the action or the word. Usually thought आए, बोल दिया, या thought आए, थप्पड़ मारा, या कोई भी thought आए, we just act on it. But मौन व्रत gives us this beautiful new skill of realizing, okay, ये विचार आए कहने का, लेकिन मैं तो कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं मौन में हूँ। तो धीरे धीरे मन सीख जाते हैं how to grab that space, ताकि हर बार कुछ भी सोचने के बाद, बोलने से पहले, मन अपने आप पूछने लगता है क्या बोलना है कि नहीं बोलना, मौन में हूँ कि नहीं। उसी मिनट में we have the opportunity, even if we are not in silence at the time, we have the opportunity to realize, हाँ मौन में तो नहीं होना भी, लेकिन
कहना नहीं चाहिए ये. And it gives us that skill at grabbing the space between the thought and the word. Because so many relationships are broken. Lives are ruined. Because ek cheez muh se nikal gayi. So by practicing Maun Vrat, we develop this beautiful skill of asking ourselves, kahun na kahun, bolu na bolu. And in that moment, we have the opportunity to decide, nahi bolna chahiye. देखिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने हमको कहा कि tapas of speech, जो बोलना चाहिए, the right speech, the dharmic speech, is that which is true, kind, and beneficial. It has to be all three of those things. When we speak, many times we say something that is not kind, not beneficial. पर हमको लगता है वो तो सच बात है, मैं क्या करूं, बोलना तो चाहिए, सच तो है ही है. But Bhagwan Krishna made it very clear. It's not enough to be only true. It must also be kind and beneficial. तो Maun Vrat rakhne se hi, we develop the skill of asking ourselves before we speak anything, should I say this? Is it kind? Is it beneficial? Is it true? So that's on the most pragmatic level of what we gain. You will notice that usually साधु संत जो है, जो मौन रखने वाले लोग, जिनकी आदत है मौन व्रत रखने का, they don't say things that they regret. और रात को वो सिर को नहीं पकड़ लेते हैं कि अरे यार मैंने क्या बोला आज. Because they have a control over the tongue, over their speech. Because they have practiced silence for so long that now their tongue is under their control. And if all of us learn that, think about how many fights in the home, in the families, in the companies, in the samaj we could avoid. How many nights you might find yourself sleeping on the couch because you said the wrong thing. Now you are on the couch. You could prevent that. थोड़ा सा अपनी tongue के ऊपर control हो जाए तो कितना बढ़िया रहता है. How much more in love we could be if we learned that. But then उसका थोड़ा सा और गहराई में जाए. जब हम मौन व्रत रखते हैं तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि मैं ना बोलूं. मौन is not just the absence of words. When we stop speaking, we're able to listen. हम दोनों चीज साथ ही साथ नहीं कर सकते. You must see sometimes in conversations, people are having a conversation, लेकिन दोनों एक साथ बोल रहे हैं. और मैं हंसती रहती हूँ कि क्या conversation हो रहा है, कोई नहीं सुन रहे हैं, सभी एक साथ बोल रहे हैं. Everybody's just listening to themselves talk. Nobody's actually connecting, learning, understanding. There's a very beautiful skill in learning to listen. When we observe silence, only then we are actually able to listen. जैसे अभी अगर आप भी बोलने लगे, मैं भी बोल रही हूँ, तो ना मैं सुन सकती हूँ, ना आप सुन सकते हैं. But you are sitting there in silence, so you are able to listen. Now in Maun Vrat, what do we listen to? The voice of God. When we are in silence, we are able to hear that inner voice. It's always there, but we cannot hear it because our chattering is so much. First from our mouths, we're always talking. And then in our mind, we are always planning क्या बोलना है. जब मौन व्रत रखते हैं,
So the mind stops planning क्या कहना, क्योंकि उसका मतलब है कि कुछ नहीं कहना, मैं तो मौन में हूँ, बोलने वाली नहीं हूँ. So suddenly we stop all of the planning of which conversations we're going to have, मैं कैसे समझाऊंगी. मन शांत हो जाता है. और जब मुंह शांत है और मन शांत है, then we are able to actually listen to the inner voice. But if we are speaking, we cannot hear it. So through Maun Vrat, as I said, it's not only an absence of speaking, it's the presence of listening. That presence of listening to that inner divine voice. So silence is not empty. Silence is full. It is full of the presence of the divine, who we can hear. Maybe we hear the presence of the divine as the sound of the birds chirping. Or we hear the presence of the divine in the sound of the wind as it blows through the leaves. Or the sound of the water of Ganga or of the ocean, wherever we may be. Or we hear it as the sound of Om. Or we hear it as the sound of our inner voice guiding us on our life. अगर मैं मौन व्रत को आध्यात्मिक पहलू से जोड़ने की कोशिश करूं, अपनी आत्म साक्षात्कार के साथ जोड़ने की कोशिश करूं, अपनी संतुष्टता के साथ जोड़ने की कोशिश करूं, तो क्या ये ठीक होगा? आपका जो संतुष्टता है वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है ना. हम बात कर रहे थे कुछ एपिसोड्स पहले, in which I was sharing this mantra that begins with Santushta Satatam Yogi. The yogi is the one who is always content. Not content क्योंकि आज बहुत बढ़िया शॉपिंग ट्रिप हो गया, आज जो भी खरीदना था सब खरीद लिया, बोनस भी आ गया. Not santushta because everybody जो मैं चाहती थी वो हो गया. Not that. But that internal satisfaction, contentment that comes from knowing this moment is divine. I don't actually need anything else. When my mind is focused externally, I think that I need something from the outer world in order to make me feel content. But when my mind is focused internally, then I realize I have everything. My cup runneth over. So if you really want to practice santushta, Maun Vrat is a perfect way, because what you will find is the contentment in the self. क्योंकि देखो जब मौन में है, आप किसी को कह नहीं सकते जरा ये ला के दे दो, अच्छा ऐसे कर दो मेरे लिए. You can't do anything. You can't go to the store and say मुझे उसका 3 दे दो. Nothing you can do. And especially when we practice Maun, it's not just silence from the mouth. We try to avoid any kind of conversation, meaning social media, meaning TV, meaning YouTube, meaning any of those things. एक चीज़ मुझे और पूछनी है, आज के इस वक्त में कितने लोग बिजी हैं आपको भी पता है, आप खुद एग्जांपल देते हैं कि लोग कहते हैं कि आई एम वेरी बिजी. तो ऐसे वक्त में क्या पॉसिबल है किसी इंसान के लिए मौन व्रत रख पाना? क्योंकि Absolutely. क्या मतलब इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, कितने वक्त का हमें रखना है? क्योंकि आमतौर पर मौन व्रत का मतलब ये है कि आप एक परम संतुष्टि में चले गए, आपका परमात्मा में आपका ध्यान केंद्रित हो गया. इट्स लाइक मेडिटेशन, लाइक साधना एंड ऑल. तो इसको अगर हम आम जैसे लोग, क्योंकि देखिए हमारा काम बोलने का है, हम लोग तो मौन व्रत रख ही नहीं सकते. Even working people, everyone can benefit from this. हाँ. पहले एक ऐसे सोचिएगा और शुरू कर देना एक रोज का नियम.
क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई मुहूर्त है that is more auspicious for it. But जैसे हम frequently share करते हैं, the mind is a creature of habit. So choose a time every day. You just need to make sure कि आपका सोने का टाइम नहीं है. That does not count. है ना, कुछ लोग कहते हैं कि चलो मैं 2 बजे से 4 बजे तक सुबह मौन रखूंगी. No, doesn't count. It needs to be a time that you're awake. सुबह का टाइम चुनो. जो भी गार्ड का जो डिस्कशंस होना चाहिए गार्ड में, उसको शाम को कर दो. पहले से प्लान करो. Be planned. सुबह का क्या डिस्कशंस करते हैं, अच्छा खाना क्या खाएंगे, कितनी बजे आ जाएंगे ऑफिस से, कोई भी उसी टाइप का प्लानिंग शाम को कर दो. सोने से पहले सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे अगर आप कर सकते हैं, मौन रहो. आप अपनी साधना कर रहे हैं, अपने स्नान भी कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, जो भी आपका सुबह का स्केड्यूल जो है ऑफिस जाने से पहले मौन में ही कर दीजिएगा. And what you will find, the beautiful thing is, number 1, you will not get stuck in this morning micromanagement. नहीं तो सारे सुबह micromanagement में जाते हैं. अच्छा तुमने ये किया, अच्छा मैं करने जा रही हूँ, अच्छा तुम ये. It's all just this nonsense logistics. जो वैसे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, जरूरी नहीं है. We just talk because we are used to talking. Right. So if you can actually make a commitment, कम से कम 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे मौन रखो सुबह. The beautiful thing then also is, you will not find yourself on WhatsApp and on social media in the morning, because you know I am in Maun. And from that, all of the spaciousness of your mind, because as the morning is, so is the entire day. If our morning begins in hecticness, if our morning begins in just logistic micromanagement, if the morning begins just in the craziness of the mind, ठीक है, इसी तरह से the whole day will go. Yes, we are busy. So that's why we need the mornings. We sleep to give strength to our bodies, to rejuvenate the bodies, to refresh the bodies. Observe silence in the morning to rejuvenate and refresh your mind, your energetic body, your heart. Then you will actually find that you are more efficient in the day. More anchored, more grounded, because you will not be in this habit of just nonsense chattering, micromanaging all the time on your mobile. The morning will set a habit, and then agar ho sakte sham ko bhi 1 घंटे रखो. You will actually find, just try it करके देख लो. You will find how much more beautiful it is to be with your family in silence. और एक शादीशुदा कपल को तो पक्का ही रखना चाहिए ना दिन में. पक्का रखना चाहिए. That you have the ability then to speak from the heart. मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद करो. दिल से बात करो आपस में. राइट. और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा ही कह के गए हैं कि पहले तोलो मोलो फिर उसके बाद में मुंह खोलो, यानी बोलो. तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सार है इन सब बातों में. और रही बात मौन व्रत की, खैर ये छोटा मोटा हल्का फुल्का मजाक जो हमने बीच में किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ही गहराई वाली बात यहाँ पर साध्वी जी ने बोली है, जो हमें एक आध्यात्मिक सुख भी दे सकता है, एक मानसिक सुख भी दे सकता है, और हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा सुख दे सकता है, जो हमारे परिवार को बांधने का काम करेगा. आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और आप देखिएगा कि आपके जीवन में बदलाव आप खुद देखेंगे. आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आपको देंगे कुछ और अलग सी इन्फॉर्मेशन. साध्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय गंगे, जय गंगे. जय श्री कृष्ण.